First of all, congratulations to all of you. All those who have come here, you have secured a good rank in CCAT. For that, hearty congratulations from C-DAC India. Right now, we will move on to the next steps. What to do after getting the CCAT ranks. So what to do in choice filling, what is counseling, all these things I'll be speaking about, right? So I'll move with the slides. Before that, once again, welcome everybody to this session. The candidates, their parents, and all those who are the spouses or whoever is present here, relatives and everybody. My colleagues from various C-DAC centers who are present here, and also our authorized training centers whoever is present here. I extend a very warm welcome to all of them. And initially, I'll be giving a session maybe up to 4 o'clock, and where most of your things will be covered. I will not be talking much about whatever I have talked in the first Q&A. I will take from now what is required. Aage kya karne ka, that I will be telling. Right, and then I'll also be covering the FAQs, frequently asked questions. So please be very attentive in this session so that most of your queries will be answered in this session itself. Okay, and please be here throughout so that you do not repeat the questions as what I am already explaining during my session. Okay, good to go. We'll move ahead, right? Thank you. So this is our February 2026 batch and PG certificate programs. I will talk about why it is called PG certificate. We were earlier known as PG diploma programs. Okay, so we have started these courses in 1993. All the PG diploma courses, our flagship program DAC was started in 1993, and we have almost completed 32 years. This is the 33rd year we are into. And so 1988 C-DAC was established under the ministry by the government of India. So I have talked about all these in the previous slide. So I'll directly move on to the presentation about the batch and the counseling part, right? So in this, or as all these from this batch onwards, the courses are 1,200 hours, right? 1,200 hours है. जैसा कि इसमें पहले भी it was 24 weeks, now also it is 24 weeks. So start to end अगर देखा जाएगा तो it is hello, can you please mute yourself? We'll take the questions only at the end. The host, please make sure that everyone else is muted, and we'll take all the questions at the end. Please note down the questions. We'll also open the chat, and we also have many of you, maybe 1,000+ people have joined in the YouTube channel. This also to YouTube live. So all their questions also, the YouTube live questions also, and also on chat Zoom questions. We will be answering. You can also ask directly the questions putting on your mic and camera towards the end. पहले मुझे ये मेरा सेशन करने के बाद ये वी विल ओपन फॉर द चैट. ओके, सो ये जो कोर्सेस है 24 वीक्स कोर्सेस है. पहले भी पीजी डिप्लोमा था, उस टाइम में भी 24 वीक्स ही था. अभी भी इट इज 24 वीक्स. ओके, बट द कंटेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 900 to 1,200 hours. And this particular batch is starting in 25th February 2026 to 11th August 2026. As you know, C-DACs, these programs, PG certificate programs, are run in 2 batches every year. Okay, so this is the February batch. These are full-time courses. Full-time courses in the sense it is you have to attend it full-time, whether it is online or physical. You need to attend it full-time. So full-time runs from 6 to 12 hours per day, depending on certain days it may be 6, at certain days it may be 12 hours also per day you need to work on. Then only we'll be able to complete these 1,200 hours in the 24 weeks duration. So every day you will be having theory plus lab sessions, and mostly it is 6 days a week in most of the centers. Okay, so now this is we have centralized exams. That is, there are 2 centralized exams this time. I will get into the details of this later. One is in the middle of the course, that is called centralized mid-course examination, and other one at the end of the course is course end examination. So
The exam structure I will explain when I talk about these two exams in the subsequent slides. We have common campus placements, region-wise common campus placements are there. This also I'll talk in the subsequent slides. So we'll move on to the next slide. Yeah, so we have 12 programs with us. So in that, 1 minute. Yeah. 12 programs are there. So the ones who are shown in blue color here, shades of blue, these are category 2 courses. The ones who have got the category 2 rank, they can choose these courses. And the one shown in orange color is the category 3 courses. We have two courses in category 3, that is embedded systems and VLSI. Other all 10 courses are in category 2. Okay, so we have advanced computing, big data analytics, IT infrastructure systems and security, artificial intelligence and mobile computing, then secure software development. Some of these courses are run only at one centers, like mobile computing is only run at Sunbeam Pune. Advanced secure software development is run at Hyderabad only. HPC system administration run at C-DAC Pune only. FinTech and blockchain development is run at C-DAC Patna. CSF, that is Cyber Security Indian Forensics, is run at C-DAC Thiruvananthapuram. And this robotics course is run at C-DAC Kolkata. And all other courses, AC, BDA, and ITSs are run in multiple centers. Embedded system and VLSI are also run in multiple centers. Okay, so move to the next one. We'll yeah, so this I'll get into the more details about the February 2026 program, free fee structure and eligibility and all other things. So what we need to do in these 6 months, starting from tomorrow, start preparing for the courses and go that extra mile with the intention, with the objective or ultimate dream of getting placed in August 2026. Okay, the participants, please do not write on the screen. Okay, that's important thing. 1 minute. So there are four changes. Some few changes are there in the February 2026 batch compared to the previous many batches, 12, 13 batches we have run as PG, DAC and all those things. So there are certain changes in this one. The first change is and the most important change is in the course name change. The course name change, somebody is scribbling. If that guy is continue to do that, please remove him from the session. Host, please take care of it. So we have the postgraduate diploma courses. Earlier, it was known as postgraduate diploma courses. Now they will be known as postgraduate certificate programs. Okay. So all the सब courses का जो short form है उसमें PGD करके आता था. अब इसको PGCP करके आता है. Okay. So earlier PG diploma in advanced computing, PG DAC था, अभी उसको PGCP-AC, that is PG certificate program in advanced computing. Why this particular course name change is done? You may be thinking that ये क्यों किया अभी पहले तक अभी तक ये था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, इसको अभी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्यों किया? This is mainly because we are trying to get the NCVT approval for the courses. This is in the process, that is National Council for Vocational Education and Training. So this is a Government of India body which certifies our courses into various categories. We are in the level 6 of the NCVT's National Quality Framework. In that, there is a higher level course, so it has been positioned in the 6th level. So because of that reason, we are trying for this. The names have been changed into that. So आपके लिए उसमें क्या फायदा है? What is the advantage for you getting into this name change? There are definitely advantages for you. इसमें है कि जैसा कि एक national जो council है उनका approval मिल रहा है, तो that is always good. And all these courses, once it is approved, okay, अभी approval का process में है, अभी approval हो गया तो mostly we hope that we will get the approval in your batch, but it is not yet confirmed. Please make it very clear that अभी आपके बैच के लिए उसका अप्रूवल नहीं हुआ है. मोस्टली हो सकता है, but I'm not committing anything about it. Once it is done and your courses will be
this is 1200 hours का course है, so this courses will be having a credit of 30 credits will be there. So 30 credit का course आपने किया है, that is a very important thing. Once that credit is there with you, you can use these credits maybe in some of the courses, higher end courses that you are enrolling. You can get exempted from that any other courses that you are enrolling with NCVT, or maybe some other places which will be using this, considering these credits of the NCVT. So this is an advantage for you, and we have enhanced the course कंपेयर टू द प्रीवियस वन. इसका जो कंटेंट है उसको और ज्यादा हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक किया है इसमें, एंड ऑल दिस हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू दैट. सो आपके लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए, दिस इज एक्चुअली ए वेरी गुड पॉजिटिव थिंग. जैसा कि हमने नेम इसको कन्वर्ट किया, एंड कंटेंट वाइज ऑल्सो हमने इसको जैसा कि 900 से 1200 किया. सो दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चेंज. इसमें जैसा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड, ये आप ध्यान से नोट करके रखिए, क्योंकि पहले जैसा है कि कुछ कोर्सेज में जैसा है कि इट वाज एडवांस कंप्यूटिंग एसी कोर्स, पीजी डैक जो था, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मार्क्स रिक्वायर्ड वाज ओनली 50%. ओके, तो अभी उसके लिए आपको 55% चाहिए. जैसा है कि आपका 12 कोर्सेज में 11 कोर्सेज विल रिक्वायर 55%. ठीक है. नाउ फॉर ओनली फॉर द AA कोर्स के लिए 60% है, बाकी सारे कोर्स के लिए 55% है. Is that clear, right? So we have standardized for all courses except AI, right? You can ask questions later only. Please mute yourself. Host, please take care of that. Then there is one interesting thing we have introduced in this particular counseling process is the freezing options. Because पिछले बैच में वगैरह बहुत सारे बैचेस में कैंडिडेट्स पूछते थे राउंड 1 के बाद हमको जैसा है कि उसको लॉक करना है, हमको जो मिला है उसको लॉक करने का उसका ऑप्शन नहीं था. अभी हमने ये, दिस इज आवर 28th बैच वी आर रनिंग थ्रू C-CAT. तो उसमें 27 बैच में हमको लॉकिंग फैसिलिटी नहीं दिया था, अभी हम लोग उसका लॉकिंग फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि दिस इज एन एडवांटेज फॉर यू दैट यू कैन लॉक द कोर्स दैट यू हैव गिवन. लॉकिंग क्या होता है इसमें, अभी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, एंड आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, दैट इज एनीवे यू आर गोइंग टू बी योर द फाइनल कोर्स. देयर इज, इवन इफ यू डोंट लॉक इट, इट इज ओके. बट समझो इसमें क्या है, थर्ड चॉइस दिया, आप 5-6 चॉइसेस दिए थे, अभी उसमें थर्ड चॉइस आपको मिला है, एंड आपने बात किया जो थर्ड चॉइस मिला सेंटर से, एंड सेंटर वालों ने बात किया आपसे, एंड आप कन्विंस हो गया कि जैसा है कि मुझे अभी आगे नहीं बढ़ने का मतलब राउंड 2 में आपको नहीं कंसिडर करने का. ऐसा है तो आपको इसका एक Sir, ऑप्शन, excuse me, sir. lock it. Okay. So this has to be, you have to take note of this there is a locking facility is there for you. So इसमें जैसा है कि काउंसलिंग के साथ मैं ये फिर से बता दूंगा आपको, then it will be more clear to you काउंसलिंग एंड राउंड्स क्या होता है. बट रिमेंबर दैट दिस टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस्ड a locking facility. And the fourth and the last change is in the, we have introduced centralized mid-course examination. Centralized mid-course examinations are introduced. पहले जैसा था, most of the batches we had only the final exams as a centralized exam. Okay, जो एग्जाम होता है अलग तरीके से, बहुत different types of exams we are conducting. One like on an average every course is having 8 modules, 8 technical modules रहते हैं, and we have aptitude also. So there are 9 modules on an average. I'm talking about some course may be having 9, some may be having 6 or whatever, but courses like DAC, DBD, AI and all that has 9 modules including the aptitude module. So इसमें आपको almost 4 modules exams evaluation, that is that final evaluation is done at the middle of the course. So when it is going to be held, I'll tell you an approximate date for it. The centers will inform you the finalized date. This is going to be in the time of in the month of May. Tentatively time is scheduled to 13th to 15th May, but इसका confirmed date आपको बता देंगे by the centers once you take the admissions. So this is one exam, and the remaining modules exam है जो that will be done through the
सेंट्रलाइज्ड कोर्स एंड एग्जामिनेशन, CCE करके जो होता था, अभी भी अभी तक वही होता था, अभी वी हैव इंट्रोड्यूस CMCE। तो यू हैव टू सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स, एंड उसके अलावा हर एक मॉड्यूल के बाद, एज आई सेड देयर आर 8 मॉड्यूल्स, अभी एक एक मॉड्यूल के बाद at the end of the module you will be having a module end examination. Module end examination is conducted by the center, at the center, or if it is online it is conducted in online mode by the center. So जैसा कि अभी जावा प्रोग्रामिंग का एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल खत्म होने के बाद you will be having a मॉड्यूल एंड एग्जामिनेशन। ये मॉड्यूल एंड एग्जामिनेशन में दो पार्ट रहता है, एक तो रहता है लैब एग्जामिनेशन, mostly it is of 40 marks, and then you have the quiz or assignments in the form, it may be 20 marks. So 60 marks ka evaluation is done by the centers, and that's not a centralized examination, individual center level ka, local center level ka evaluation hota hai। 40 marks ka examination is done through the CCE and CMC। okay, तो इसमें ये दोनों में जो तरीका है कंडक्ट करने का, उसमें क्या डिफरेंस है? One, as I said, the module and examinations are conducted by the center. If you are a physical student, it is conducted at the center itself by the center. If it is online, if you are an online student, it is conducted in the online mode by the center which is running the course. Okay, so it is entirely done by you don't have to travel anywhere for this purpose. But if it is CMC and CCE, you have to go to a center nearest to your house. We will be giving a list of centers. उसमें आपको जो पास में है, घर का पास में, वो सेंटर पे जाना पड़ता है। If it is an online student, you have to go to the nearest center and give the exam. But if you are a physical student, physical batch student, your exams will be conducted in the city where you are enrolled. Okay, so if it is in Pune, the exam will be conducted in Pune itself, mostly at the center where you are enrolled. Okay, so physical students, once you join, they don't have to travel anywhere to another city or anything. Okay, online students, only for these exams, they have to travel to the nearest center. They don't have to come to the particular center where they have enrolled. I'll give an example. Suppose you have enrolled for C-DAC Trivandrum for the CSF course, Cyber Security and Forensics. For any practical things, you don't anything you don't have to travel to Trivandrum for the course. The running of the course is done in online mode. The exams, module and exams are done in the online mode, and the final exams wherever you are nearby. If you are from, say for example, if you are from Mumbai and doing the course, you can come to one of the Mumbai centers and do the courses, and the placements will be done in the Mumbai region. So this is in nutshell about it. I explain a little bit more about it because the course CMCE is introduced for the first time. Now, what are the eligibilities of these courses? Okay. Eligibility of the courses, we have there is something called as common eligibility. कॉमन एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी मीन्स अगर आप ये स्ट्रीम से है तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दी courses that we are offering. 12 courses you will be eligible, provided you have 55% for the 11 courses and 60% for the AA course. Okay, so what are these common eligibility में क्या क्या आता है? That is, one is graduate in engineering in IT, computer science, electronics, telecommunications, electrical and instrumentation. Electronics and telecommunication भी कुछ लोगों ने किया है, so these are all eligible for it. Okay, and MSc in computer science, IT and electronics are also considered as for under common eligibility, and you can enroll for any of the courses. Now, those somebody who has given the exam, उस exam दिया है, somebody had backlog and they had given the exam, और कुछ universities ने result publish नहीं किया है, whether they are eligible to attend these courses in the February 2026 batch, yes, they can attend, provided they have appeared all the exams. They have to appear all the exams before joining. Joining के पहले सारे एग्जाम्स है जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है सब अपियर करना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अगर कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको ये एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, दूसरा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए और अपियर करने के लिए
टाइम नहीं मिलता है, राइट। यू डोंट नीड टू हैव द रिजल्ट्स बाय देन, ज्वाइनिंग के टाइम में रिजल्ट्स होना जरूरी नहीं है। यू हैव टू शो द एलिजिबिलिटी प्रूफ बाय 30th जून 2026, राइट। तो जून तक आपको इसका एलिजिबिलिटी का प्रूफ दिखाना है। प्रूफ क्या है? यू कैन शो योर सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट. These are all fine with the center. You can connect with the center where you are taking admission for more details about it. And there are certain courses that has additional eligibility. Additional eligibility मतलब common eligibility तो है ही है, उसके अलावा additional eligibility क्या क्या होता है, that is what is explained here. जैसा कि courses like AC, Advanced Computing, Data Analytics, AI, Blockchain, Cyber Security and Mobile Computing, इसमें discipline of engineering is eligible. As I said, AI needs 60%, बाकी सबके लिए 55% है. तो civil engineers, mechanical engineers, all of them can take up these courses mentioned over there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses are there in this category of that. Okay, so then MSc and MCM and MSc in physics, mathematics and statistics, all are eligible for these courses. Okay, and move on to the next one, the ITISS course, ITSS course, and then HPCSA course. These have MSc in mathematics, statistics are also eligible along with the common eligibility, and MCA is also eligible. Then you have the ASSD course. Usme, in addition to the common eligibility, MCA is eligible. Okay, and then you have the robotics course. In that, in addition to the common eligibility, graduate in mechanical and mechatronics is also eligible. तो ये जो presentation का जो slides है, whenever I'm giving this, you can take a screenshot and keep it with you for easy reference. This will be made available on the YouTube channel later, so you can view that later also for any kind of references. Quick reference अगर करने का तो आप इसको screenshot लेके रख सकते हैं, ठीक है। This is important thing. तो इसमें at this stage you may not need to worry so much, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये सब दिया होगा। ओके, तो if you have given this as somebody who is having the eligibility, only common eligibility है, and you are like, so say for example you are from this, you will be eligible for all the courses. But if you are somebody who is from civil engineer, you will not be eligible for the courses like HPCSA, robotics and ASSD and ITSS. They will not make you eligible. तो आपको जो choice filling में वो courses select करने नहीं होता है, because you are not eligible for those courses. तो choice filling देख के आपको ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि डरना नहीं चाहिए कि मुझे ये select होने नहीं हो रहा है तो क्या करो, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट कोर्स, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है. दैट इज द थिंग. Either that or you don't have the CCAT rank. You have not got the CCAT rank for category 2 and 3. Now there are certain courses where there is eligibility. There are some sponsorship schemes are there. So this is what I'm going to talk about here. There is a sponsorship scheme from Bharti, that is Baba Saheb Ambedkar Research and Training Institute. उसमें से this is only for the SC candidates of Maharashtra. SC candidates of Maharashtra gets this sponsorship. So the students, what they need to do, if you are belonging to this category, you have to anyway pay the first installment as a caution deposit. Okay, towards the end of the course, you will get that amount also refunded. And उसके बाद आपको अगर आपने SC कैंडिडेट है महाराष्ट्र से, इट्स ओनली अवेलेबल फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स विद एन SC कैटेगरी सर्टिफिकेट. So if you are belonging to that category, आप फर्स्ट चॉइस भरने के बाद 18 to whatever date is mentioned, उसके बीच में you will be getting one link on the website. वो लिंक आपको इसमें डाल सकते, लिंक क्लिक करके तो भारती का वेबसाइट में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है. इसका डिटेल्स यू कैन कनेक्ट विद द सेंटर्स फॉर मोर डिटेल्स. लिंक विल बी ओनली सीन आफ्टर यू फ्रॉम 18th of this 1 minute 31st of January to 18th February. The link will be available. 31st is why? Because we are going to have the choice filling done and seat allocations of the first round will be
announced during that time. Okay, so 31st January से 18 February तक आपको इसका भारती का स्कॉलरशिप का स्कीम का लिंक वेबसाइट में आ जाएगा. You can see, but make sure that it is only for the SC candidates of Maharashtra. Okay, yeah, and next is that what are the different types of courses that we are offering. That some courses, the online mode and the physical mode is that I'm going to explain now. There are certain courses that are run only in the online mode. There are certain courses that are run only at the online mode. The 2 courses are there out of 12 courses that are run only in the online mode. That is the cybersecurity and forensics. As I said, it is run only at C-DAC Trivandrum in the online mode. And then you have the blockchain technology, fintech and blockchain development course that is run at C-DAC Patna. These are run in online mode only. Only one center, that too in online mode. There are certain courses that are run only in physical mode. Only in physical mode. There are no online courses of these available. These are embedded system, ITSS. Earlier it was known as DITIS course, and the mobile computing course, VLSI course, and ASSD course, secure software development course, HPCSA course, high performance computing course, and the robotics course. These are run only in the physical mode. Okay, and the courses run in online as well as physical mode. There are certain courses जैसे कि उसको ऑनलाइन में भी चला रहा है एंड फिजिकल में भी चला रहा है. दैट इज AC एडवांस कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा एनालिटिक्स एंड AI कोर्स. इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन भी चला रहे, फिजिकल भी चला रहे, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ऑनलाइन चला रहे मींस द सेंटर्स विल रन ओनली दैट इन दी ऑनलाइन में अगर चल रहा है तो इट विल बी रन इन दी ऑनलाइन मोड ओनली. ऑनलाइन मोड मतलब स्टार्ट टू एंड the course is run except for the core centralized exams CMC and CC. It is run in the online mode. Online mode means the delivery of the classes, delivery of the lectures, lab, the module and exams, everything is done in the online mode for that. Physical mode का मतलब क्या है? These courses are run entirely in physical mode. Physical mode में चला रहा है. So that is like the course runs at C-DAC Pune, for example. They are all in the physical mode. So once you enroll for those courses at C-DAC Pune, start to end, the entire thing, including the exams, are run in physical mode at the center. So lectures, lab, exams, everything is run in the physical mode at the particular centers where it is offering in the physical mode. Okay. Online, only for the CMC and CC, you have to go for the nearest center, as I mentioned earlier, right? Any doubt is there on this? You can ask afterwards. Move on to the next one. We'll have the so which are the centers that are running online and which are the centers that are running the physical? That information is given over here. So you can take a screenshot of that. We have around 12 centers where certain courses are run in the online mode. तो इसका screenshot निकाल के रखिए. ये सारे जो है online mode में चला रहे हैं. So certain centers are there where the courses are run in. Some courses are run in online mode. Some courses are run in the physical mode. For example, C-DAC Mumbai, Kharghar, we have the DAC course run in the online mode, whereas the DBDA and the big data analytics and the AI course are run in the physical mode. So this is that is what is given in the next slide. We have the courses that are running in the physical mode. Okay, so here there are around 21 centers where the courses, multiple courses are run in the physical mode. Take a screenshot of this and keep it with you. You'll come to know all the centers in Pune are running in the physical mode. Bangalore and other centers as mentioned over there. Now talk about the most interesting thing, like you are all looking for the most of the students join us for placements. So I'll talk about that. How does it function? So the entire all across जो admission students है उनको 5 region में divide किया है. We are divided into 5 regions. Okay. So the regions are Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Noida and Pune. There are 5 regions in that. So इनके साथ जो centers के साथ जो sorry ये region के साथ ये centers whatever is mentioned under it are associated. Like example, you have Bangalore region.
दिस इज कॉल्ड एज कॉमन कैंपस प्लेसमेंट रीजन, शॉर्ट में बोलते हैं कि CCPP बोलते हैं. सो Bangalore region में C-DAC Bangalore is there, C-DAC Chennai is there. C-DAC Hyderabad region has only C-DAC Hyderabad with it. Mumbai region has Guwahati, Kochi, Kolkata, Mumbai, Navi Mumbai, and Trivandrum. We have Noida Center, Noida के अंदर C-DAC Noida is there and C-DAC New Delhi is there. Pune region के अंदर we have the Bhubanesh centers, Bhubaneswar, Indore, Jaipur, Karad, Nagpur, Nasik, New Delhi, that is White Center, and Patna and Pune. All these centers are associated with the Pune region. तो associated का meaning क्या होता है वो मैं बताता हूँ. Associated, मैं भी thinking that इसका association का मतलब क्या है. तो जैसा है कि if some student has joined for an online course at कोलकाता, कोलकाता के अंदर एक कोर्स ऑनलाइन है, उसमें आप रजिस्टर किया है, तो आप कोई भी चीज के लिए यू आर ए स्टूडेंट फ्रॉम औरंगाबाद फॉर एग्जांपल, सो यू कैन अटेंड द कोर्स फ्रॉम योर हाउस इन औरंगाबाद एंड कोलकाता जाने का जरूरत नहीं है उसके लिए. इफ इट इज एन ऑनलाइन कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इफ इट इज एन ऑनलाइन कोर्स यू डोंट हैव टू गो टू द सेंटर वेयर you have enrolled. You can do it from your home itself. But for placements, it is under Mumbai, so you have to come to Mumbai for the placement. So औरंगाबाद से आपको मुंबई आना पड़ता है. एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम के लिए आपको नियरेस्ट प्लेस में जा सकता है, whether it is Nasik, Pune or Mumbai, anywhere you can come and give the exams. Okay, this is one scenario of the online courses. दूसरा सिनेरियो जैसा है कि पुणे का फॉर एग्जांपल you are taking admission in Nasik for example, MET Nasik में एडमिशन लिया है, that comes under Pune region, means you have to come to Pune, और पटना में एडमिशन ले रहे हैं, you have to come to पटना come to Pune region का अंडर है, तो पुणे में आना पड़ता है for the placements, only for the placements you have to come. Otherwise the entire thing you can do. If you are a MET Nasik student, you can do it from Nasik itself. Okay, so this is the details about the CCPP programs, the respective regions placements and centers placements. You can connect with the centers, आप बात कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट करो, अगर विजिट कर सकता है तो बता करो. आई विल नॉट बी स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सेंटर्स हियर इन माय प्रेजेंटेशन. मूव ऑन टू द नाउ. अभी आपको क्या करना है immediately, that is what I am going to see. Many students have already, candidates have already choice filled. We are getting the count of the candidates who have already filled the choices. But अगर नहीं किया तो आपको immediately what you need to do is that results are out, you have to go and do the choice filling. choice filling को हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं. ओके, तो इसमें जैसा है कि सी कैट रैंक आया है आपको, तो मैं 2 मिनट इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. आपको कुछ डाउट रहेगा, मेरा रैंक ही नहीं दिख रहा है, नॉट क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड ऐसा करके आ रहा है, नॉट एलिजिबल करके आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस स्लाइड. ओके, तो सी कैट रैंक का फंडा है ऐसा है कि it is published on 22nd Jan, and there are separate ranks for category 2 and 3. So there are 2 ranks you will get if you are a category 3 candidate. अगर आपने A plus B plus C exams दिया है, and if you have qualified in all the sections if you have qualified, you will get category 2 and 3 का रैंक मिलेंगे आपको. ठीक है, so this is what some students who are in the category 3, they must have got category 2. कुछ स्टूडेंट्स को कैटेगरी 3 का सेक्शन सी भी दिया था, लेकिन एक ही रैंक मिला है. इसका रीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का जो पार्ट में लिखा है. प्लीज गिव मी अ मिनट. Yeah, candidates with the lowest 10% marks in section A will be disqualified from CCAT ranking. जैसा है कि जो जो जितना भी कैंडिडेट्स ने अपीयर किया CCAT के लिए, उसमें से जो लोवेस्ट 10% मार्क मिला, सबसे नीचे का 10% लोग हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया है. उनको डिस्क्वालीफाई किया. सो उनको अगर ए में डिस्क्वालीफाई किया तो उनको बी और सी में भी रैंक नहीं मिलेंगे. सो ए का क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो टू गेट क्वालिफाइड इन ए, यू नीड टू बी इन दी
यू शुड नॉट बी इन द लोवेस्ट 10%। लोवेस्ट 10% में तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड बी एंड सी में भी आपको ए में भी ए में अच्छा मार्क्स मिला होगा, योर इंग्लिश इज गुड, योर एप्टीट्यूड इज गुड, सो यू मे गेट गुड मार्क्स इन सेक्शन ए। बट आपको अगर जीरो और नेगेटिव मार्क्स मिला सेक्शन बी एंड सी में, देन यू नीड टू यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। जीरो एंड नेगेटिव मार्क्स इन बी एंड सी विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके। एंड देन इसमें अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो पहले डिस्क्वालिफिकेशन बोला, अभी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है। क्वालिफाई होने के लिए कोई भी सेक्शन में, कोई भी कैटेगरी में रैंक मिलने के लिए सेक्शन ए का रैंक जरूरी है। एक सेक्शन ए में डिस्क्वालीफाई किया तो आपको कोई भी रैंक नहीं मिलेगा। एंड कैटेगरी टू में रैंक मिलने के लिए ए और बी का क्वालिफाई होना चाहिए। एंड कैटेगरी थ्री का रैंक मिलने के लिए ए बी और सी तीनों का रैंक मिलना जरूरी रहता है, राइट। सो दिस इज इन शॉर्ट फॉर द क्वालिफिकेशन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इतना आपको बताया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्लाइड में जो आपको बता रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है। सो काउंसलिंग मीन्स ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ओके। उसमें चॉइस आप किस 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 का चॉइस भरता है, चॉइस भरता है आप कोर्स का चॉइस भरता है। पहले चॉइस कोर्स सेलेक्ट करता है, उसके बाद आप ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करता है, ठीक है। सो यू हैव कोर्स choice filling and center choice filling done during the counseling part. Okay, so what is meant by what the count I have told what is meant by counseling. अभी आपको इसमें first counseling and second counseling, the host please accept the people because it is actually blocking my screen. Right, the people are waiting in the queue, and immediately please make sure you are entering them, okay, because it's disturbing my view. So we have there are two counseling sessions, first counseling and second counseling. आपका ये एडमिशन प्रोसेस में सिर्फ दो काउंसलिंग है। दो काउंसलिंग मींस आपको जो मौका है दो बार चॉइस फिल करने के लिए, ओनली टू टाइम्स यू कैन फिल द चॉइसेस। नाउ इसमें चॉइस फिल करने का तो कितना भी चॉइस फिल कर सकते हैं, वो मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ। एंड उसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग है, फर्स्ट चॉइस फिलिंग अभी आप कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेंस, इसके बेसिस पे राउंड वन एंड राउंड टू दोनों इसके बेसिस पे होते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग के बेसिस पे होता है, राइट। सो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है, आप जो अभी है बहुत इंपॉर्टेंट फेस में। एंड देन यू हैव ए सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग का मतलब क्या है, पहले आपने दिया है राउंड वन और राउंड टू हो गया, तो सेकेंड काउंसलिंग का क्या जरूरत है। कुछ सेंटर्स में राउंड वन और राउंड टू के बाद कुछ सेंटर्स में कुछ सीट्स अवेलेबल है, right, only some seats are vacant. For that we will be having the second counseling, उसमें fresh choice filling लेगा, उसके बेसिस पे थर्ड राउंड का सीट एलोकेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर द वेकेंट सीट्स, बट रिमेंबर दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बता रहा है, प्लीज रिमेंबर दैट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप सोशल मीडिया में भी इसके बारे में बहुत पूछते रहते हैं, इसलिए ये ध्यान से सुनिए। जो अगर आपको राउंड वन और राउंड टू में एडमिशन नहीं मिला फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप C-DAC पुणे का एडवांस कंप्यूटिंग का चॉइस किया है, उसको अगर आपको उसमें राउंड वन और राउंड टू में मिला नहीं है तो राउंड थ्री में भी वो नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज राउंड थ्री का कट ऑफ इज बेस्ड ऑन राउंड टू का कट ऑफ, ठीक है। तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो कट ऑफ इज डिसाइडेड बाय द सिस्टम, हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर दैट कोर्स दैट सेंटर, उसके बेसिस पे हमको भी पता नहीं है, इसलिए हम लोग को डिस्प्ले नहीं करते हैं। लेकिन ये ध्यान से सुनिए, अगर राउंड वन और राउंड टू में कोई सेंटर आपने जो चॉइस दिया है फिर भी आपको नहीं मिला है, फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस दिया है आपको मिला नहीं है, तो राउंड थ्री में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर, इसके बेसिस पे आप कोई भी कोर्स में एडमिशन मिला है विड्रॉ मत कीजिए, ठीक है। नाउ ये सीट एलोकेशन का फंडा क्या होता है, सीट एलोकेशन क्या होता है ये बता देता हूं आपको। इसमें है सीट एलोकेशन का दो तीन पैरामीटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तीन पैरामीटर्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सी कैट रैंक। सी कैट रैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट। तो सी कैट रैंक आपको अगर है, एंड देन सेकेंड चीज है, ये तीनों इसके ऊपर जो सिस्टम एलोकेट्स यू
to the particular centers for the particular courses. Okay, तो second जो parameter है, the order of preferences of courses and centers. तो इसमें जो है सीकैट रैंक आपके पास अभी उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सीकैट रैंक आ चुका है. एंड देन यू हैव, इसमें तीन पैरामीटर्स में आपके पास ये कंट्रोल है सिर्फ टू में. नंबर टू जो लिखा है पैरामीटर टू में है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स एंड सेंटर. ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्सेस एंड सेंटर्स यू हैव टू गिव नाउ. ये बहुत सोच समझ के देने का एक जरूरी है इसका, क्योंकि आप जितना भी इसका है R&D कर लो इसके ऊपर. डोंट जस्ट आस्क पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड टेक ए डिसीजन ऑन दैट. सोशल मीडिया से इनपुट ले लो, दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट डोंट बेस इट ओनली ऑन दैट. जो पॉइंट टू में मैं बता रहा हूँ, आप सेंटर से बात कर लो, अगर पास में है तो सेंटर विजिट कर लो, स्टूडेंट से बात कर लो, पता चलेगा आपको इसके बारे में. तो ऑल द इंफॉर्मेशन, फिजिकल विजिट, फोन कॉल कर लो, आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले लो, इसके ऊपर आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा कोर्स और कौन सा सेंटर पे लेने का. दैट इज वन पैरामीटर. दूसरा जो पैरामीटर है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं करने के लिए, व्हाट कोर्स यू वांट टू टेक, आपका कैपेबिलिटी क्या है. आपको मैंने मेल लिखा है सबको, जो सिलेक्शन हुआ है उसमें तीन पैरामीटर्स लिखा है, व्हाट टू टेक केयर व्हाइल फिलिंग द चॉइसेस. क्या पैरामीटर्स है वो ध्यान से पढ़िए, ईमेल पढ़िए, इट इज अ वेरी स्मॉल ईमेल, रीड दैट. ओके, एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाथ में है अभी. एंड द थर्ड वन इज द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एट दिस सेंटर. ये तो सीडैक ने डिसाइड किया है. सीडैक के वेबसाइट जो है सीट एलोकेशन द प्रोसेस वेबसाइट में भी दिया, अभी मैंने आपको भी बताया एडमिशन केस में, ये चेंज नहीं होगा, दिस ऑलरेडी डिसाइडेड. तो ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर आपका सीट्स अलोकेट होगा. योर सीट्स विल बी अलोकेटेड बेस्ड ऑन दीज थ्री पैरामीटर्स. ओके, सो वी में मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो आपको अभी क्या टेक केयर करने का, मैंने ये बोला है, ये मेल में भी लिखा है, बट आपको एक बार मैं बताता हूँ उसको, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल थिंग. आप जानना बहुत जरूरी है ये. फर्स्ट इज दैट यू नीड टू डिसाइड विच कोर्स और सेंटर यू वांट टू ज्वाइन. आपको ये कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, दैट्स द फर्स्ट डिसीजन. आपको डैक ज्वाइन करना है, एसी जो एडवांस कंप्यूटिंग ज्वाइन करना, बिग डाटा एनालिटिक्स ज्वाइन करना, एआई ज्वाइन करना, और सिक्योरिटी ज्वाइन करना, एम्बेडेड सिस्टम ज्वाइन करना, ये जो है आप डिसाइड करना. आप खुद को एनालाइज कीजिए, क्या डिसाइड, क्या ज्वाइन कर, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड देन डू एन R&D ऑन व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स, करंट जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑन दैट, फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स है, वो सारा चीज आप देखिए, उसका पूरा R&D कीजिए. इसमें आपको टाइम है 28 जनवरी तक चॉइस भरने के लिए, ठीक है. तो उसके बाद आप अगर भर दिया तो भी उसको चेंज भी कर सकते हैं 28 जनवरी तक, यू कैन डू दैट. सो एंड द सेंटर यू देन, एक बार कोर्स डिसाइड हो गया, से फॉर एग्जांपल यू हैव डिसाइडेड टू डू द कोर्स ऑन डाटा एनालिटिक्स. ओके, यू वांट टू बिकम ए डाटा इंजीनियर, यू वांट टू डू द डाटा एनालिटिक्स. अभी देखो कौन सा सेंटर्स डाटा एनालिटिक्स ऑफर कर रहे हैं, तो उसका प्रोस एंड कॉन्स पढ़ो. आपको जैसे कि देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, यू सी दैट एंड यू टॉक टू द स्टूडेंट्स, टॉक टू द सेंटर, ऑनलाइन गैदर करो इंफॉर्मेशन जो भी है, इसके बेसिस पे एक डिसाइड कर लो ये कोर्स करना, ये सेंटर करना. ओके, एंड अगर आपको इसको नंबर 1 2 3 करके आप लिखे रखो अपना नोटबुक में, एंड देन वो उसको आप चॉइस फिलिंग के टाइम में भर दीजिए, राइट. सो दिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आप जो सीक्वेंस दे रहे हैं कोर्स और सेंटर का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जो आपको पहले जो चाहिए वो पहले नंबर पे दे दो, सेकंड जो चाहिए सेकंड नंबर पे दे दो. इसको उल्टा पुल्टा मत कीजिए, ठीक है. ये प्रॉब्लम ये चेंज नहीं कर सकता है. राउंड 1 एंड राउंड 2 आर बेस्ड ऑन योर चॉइसेस दैट यू आर डूइंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड गिव एज मेनी चॉइसेस ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर्स. अगर आपको जैसा है कि 1000 का रैंक है, and don't give only one or two centers and then course and centers and finish off. तो आप मल्टीपल सेंटर्स में मल्टीपल कोर्सेस का दे दो, ठीक है. ये भी पॉसिबल है आपको. अगर आपको डाटा एनालिटिक्स देने का तो डाटा एनालिटिक्स का दे सकते हैं, उसके बाद डैक का भी दे सकते हैं, ए का भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी सेंटर कोर्स कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है. देयर आर अराउंड 65 चॉइसेस, यू कैन मेक मल्टीपल कोर्सेज एंड मल्टीपल सेंटर्स. ऐसा है. इट इज, रिमेंबर दिस, इट्स नॉट लाइक आप अगर
दिस वन डाटा एनालिटिक्स डिसाइड किया तो सिर्फ डाटा एनालिटिक्स का ही चॉइस देने का, ऐसा नहीं कि आपको आप एडवांस कंप्यूटिंग का भी डाल सकते हैं, बाकी कोर्सेज का भी डाल सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मेक श्योर दैट यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस कोर्सेज। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना बहुत जरूरी है। दिस यू हैव ऑलरेडी फिल्ड इट इन दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके बेसिस पे आपको दिखाई देगा फॉर चॉइस फिलिंग के टाइम में, राइट। बट मेक श्योर दैट यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी परसेंटेज कैसे डिसाइड करता है, वो लाइक द वे योर यूनिवर्सिटी इज डिसाइडिंग द परसेंटेज, जो यूनिवर्सिटी अग्रीगेट और फाइनल सम ईयर एंड ऑल, आपका यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करता है वही हम लोग भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने सब एडिट किया, चॉइस फिल किया, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू सेव योर प्रेफरेंसेस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सेव नहीं किया तो आपका ये जो अनसेव्ड रहेगा वो लोग विल नॉट बी एबल टू कंसिडर दैट, ओके। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल चॉइस फिलिंग नाउ एट दिस स्टेज। मूव टू द नेक्स्ट वन। फीस के बारे में बताता हूँ आपको, बिकॉज चॉइस फिल करने के बाद आपको अगर सीट एडमिट हो गया तो आपको देर आर टू स्टेजेस आर देयर इन द चॉइस फिलिंग। इसमें दो चॉइस फिलिंग है। आपको पहले भरने का है कि फर्स्ट काउंसलिंग का, सॉरी फर्स्ट राउंड का फी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस यू हैव टू पे, दैट इज 11,800 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी यू नीड टू पे। तो इसका जो है डेट्स में आपको बताता हूँ, जो हो एक स्लाइड है इंपॉर्टेंट डेट्स का, उसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फीस भरना है 11,800 टू प्रोविजनली कंफर्म योर एडमिशन, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू हैव टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज लाइक द रिमेनिंग फीस यू हैव टू पे इन वन शॉट एज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अभी इसका फीस क्या है, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर। यू हैव द फीस ऑफ वेरियस कोर्सेज मेंशन्ड। ऑनलाइन कोर्सेज का फीस अलग है, फिजिकल कोर्सेज का फीस अलग है, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल एसी कोर्स, एडवांस कंप्यूटिंग कोर्स का 90,000 इज द फीस फॉर द फिजिकल कोर्स, एंड ऑनलाइन एडवांस कंप्यूटिंग का ऑनलाइन का फीस है 76,500 प्लस जीएसटी, बोथ आर देयर, ओके। सो ए का जो है 1,50,000 इन फिजिकल मोड, ए का ऑनलाइन में 127,500 इज देयर, राइट। So and the data analytics physical is 1,15,000 and in online mode it is 97,750, right. So there are two fees in these three courses where depending on what mode you are taking, it is to be paid in टू इंस्टॉलमेंट, ओके। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको मिस किया बताने के लिए ये चीज में, जैसा कि फर्स्ट काउंसलिंग में राउंड वन होता है, राउंड टू होता है। अभी राउंड वन में आपको कुछ सेंटर अलोकेट हुआ। सपोज इफ दैट इज योर, आपने 10 चॉइस दिया था एंड आपको जो अलोकेट हुआ था आपका फिफ्थ चॉइस, आपका पीछे का फिफ्थ चॉइस अलोकेट हुआ। नाउ to consider you in round two, आपको for you are interested say for example in third or second or first one, तो उसके लिए आपको अगर चाहिए तो आपको अभी फिफ्थ का एलोकेट हुआ है, तो आपका यू हैव टू फिल द फीस, यू हैव टू पे द फीस 11,800 फीस फीस पे करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन। चॉइस नहीं भरने का आपको, क्योंकि राउंड वन एंड राउंड टू आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट चॉइस फिलिंग, बट आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो जो भी है राउंड वन में सीट एलोकेट हो रहा है तो प्लीज पे द फीस एंड कंफर्म योर एडमिशन एट दैट स्टेज, so that if you are eligible in the second round you will be upgraded if you are eligible. That is not confirmed, but to be considered for that you need to make the payment, okay. So this is what the fees to be paid in two installment. First installment 10,000 plus GST, and the remaining fees to be paid by 23rd February. This is to be paid by the NEFT. You have first one के लिए credit card है, debit card है, and also you have the UPI also. You can make the payment. Second installment is to be paid through NEFT.
Okay, so there is time between first and the second installment. Now, sir, you can get educational loan. Educational loan मिलने के लिए loan letter you will be made available to all of you on the website after round 2 seat allocation. तो round 2 का seat allocation होता है 6th February. तो 6 February के बाद आपको एक letter आ जाएगा with my signature on that. You can get it and show to the banks. Before that itself, round 1 में अगर आपका seat allocate हुआ तो आप जाके बात कर सकते हैं बैंक में सेट करके आ सकता है, राइट. लोन्स आर गिवन बाय द सेंटर, some banks are empaneled with us, so you will get that. Now this is about my presentation part. इसमें अभी मैंने लास्ट पार्ट इज frequently asked questions. ठीक है, तो जो आपको बताने का था सारे जिस एस आई सेड 4 o'clock आई हैव डन दैट पार्ट. अभी आपको जो है क्वेश्चंस है इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पहले से ही बता रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस रिपीट करने का जरूरत नहीं है. सो प्लीज लिसन टू दिस पार्ट वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, रेडी फॉर दैट? सो विल गो विद द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ओके. Payment of first installment fee after round 1 and round 2. I have already told this. First installment fee to be paid compulsorily after round 1 if you are allocated seat in round 1. Whether you got the top preference or lower preference, आपको round 1 में fees pay करना पड़ता है. आप fees pay नहीं किया तो you will not be considered for round 2. राउंड 2 के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, अभी राउंड 1 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया और मेरा जो सेंटर था, फॉर एग्जांपल इट वाज वन सेंटर ए, उसके बाद राउंड 2 में अपग्रेड होके सेंटर बी चला गया. तो आप फी पे किया था राउंड 1 में, अभी दोबारा भी राउंड 2 में पे करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं. एक बार ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस पे करना. अगर आपने राउंड 1 में पे किया तो राउंड 2 में पे करने का जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज you keep asking these questions in the chat or otherwise, so please make sure that एक बार राउंड 1 का पेमेंट किया तो राउंड 2 में पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा. सो राउंड 2 में कौन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का? हु हैज टू पे इन राउंड 2 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? किसको पे करने? राउंड 2 में पहले बार एडमिशन मिला है, जैसा कि फर्स्ट टाइम दे हैव गॉट एडमिशन, राउंड 1 में नहीं मिला था, फ्रेश एडमिशन मिला, मतलब पहले बार एडमिशन मिला है राउंड 2 में, राउंड 1 में नहीं मिला था, ऐसा कैंडिडेट्स है तो दे हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ओके. सेकेंड वन, विथड्रॉवल्स एंड फीस रिफंड. विथड्रॉवल्स का डेट्स दिया है एडमिशन बुकलेट में, देयर आर डेट्स गिवन फॉर दैट, तो उसका भी there are some penalty for that once you make the payment to withdraw. It starts with 1,000 rupees का penalty से लेके you have the penalty of 10 the for whole first installment fees का ही penalty, and even more than that 50% of the course fee और full course fee का fee penalties है. वो सारे चीज से admission booklet में पेज नंबर 18 में दिया है. ठीक है, फी उसमें fee refund is given till certain date, वो सब मेंशन किया. नाउ कट ऑफ द सेंटर्स, वो सारा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कट ऑफ आप क्यों पब्लिश नहीं कर रहा है. सारे जो आपको हमको सोशल मीडिया से अनकन्फर्म्ड सोर्स से इनफॉर्मल मीडिया से मिलते रहते हैं, तो आप क्यों खुद पब्लिश नहीं करते हैं C-DAC? दिस इज द डाउट दैट यू हैव. वी डू नॉट पब्लिश दिस बिकॉज एवरी बैच द कट ऑफ कीप चेंजिंग. जैसा है कि कोर्स का डिमांड के ऊपर है, कितना कैंडिडेट्स ने कोर्स डिमांड करते हैं, वो सेंटर का वैकेंसी के ऊपर है, तो ये डायनामिक होते रहते हैं, इसलिए वी डू नॉट पब्लिश द कट ऑफ द सेंटर्स. ओके. एंड सो हमको पूछिए मत क्या कट ऑफ है, इसमें हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, है हम बता नहीं सकता है. तो इसके बारे में विच कोर्स टू चूज एज पर माई रैंक, दिस इज अ वेरी tough question you asked me, and I will not be able to answer that. Every course, wherever whichever center we are running, they are all run through our system. Like we have designed it through through the C-DAC's academic council. Whether the course is run at any C-DAC center or authorized training center, the syllabus is same. The way it is supposed to be run is same. Everything is similar. So, and the exams are centralized exams. Final exams are going to be happening, and placements are happening in the region wise. Okay. So, like once we design a course and allocate it to particular centers, we have certain parameters.
the centers are fulfilling those good parameters, then only we are giving it. So all the centers wherever the course is run, it is good. Now आप R&D करने के बाद आपको कुछ आपने डिसाइड किया कि मेरा प्रेफरेंस ये है, नंबर 1, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ऐसा है, तो आप उसको ऑर्डर पे दे दीजिए. ओके, सिस्टम विल डिसाइड विच वन यू विल गेट. आपने अगर 3000 रैंक मिला है, फिर भी आपने कुछ सेंटर दिया है विच यू मे नॉट बी गेटिंग इट, बट आप दे दीजिए, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट सिस्टम विल एलोकेट एज पर योर रैंक. ओके, सो गिव the choices as per your preferences, whatever your rank may be. Okay, that's very important thing. तो इसके लिए आपको मुझे 2000 का रैंक है, मुझे ये सनबीम मिलेगा कि नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चंस मत पूछिए अभी इसमें. आप अगर सनबीम चाहिए तो सनबीम को पहले प्रेफरेंस डाल दीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें. एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एट सेंटर्स, आई विल नॉट बी स्पीकिंग अबाउट दीज नाउ. सो देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग दिस, बार बार क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है. तो लेकिन आप इस ये है, सेंटर विजिट कीजिए, सेंटर को कॉल कीजिए, उन लोग आपको बता देंगे what is the approximate placement percentage of the center at various batches. They will let you know. Okay, and what is the placement shortlisting criteria? ये क्वेश्चन में आपको ही आप पूछने वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूँ. ओके, और मैं मैरीटाइम इंजीनियर है, मैंने ये कोर्स किया है. मैं आई एम बिकॉज मैरीटाइम इंजीनियर इज एलिजिबल फॉर डैक डीबीडीए एंड एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. तो उसमें एंड आई हैव डन दिस कोर्स इन 2022, whether I will be eligible for the course. There are certain companies who consider the eligibility criteria. As per that, they may be considering only CSIT, electronics, and the core branches, we call it. Okay, but there are many companies who are considering any graduate, any discipline graduate. Okay, तो कोई भी discipline में है तो भी आप admission ले सकता है, right? And if you are eligible for that particular course, you can take it. What you need to do is that you need to perform really well during these 6 months. आप अभी मैकेनिकल इंजीनियर है तो that cannot be changed to computer science now, right? But your performance during the 6 months, that you can be made at the top level, so that you can get. There are so many mechanical engineers, civil engineers, and all. They have got top ranks in our institutes across India, and they have got the best placement. So that is, you don't have to worry if you are determined to do the course really very well, right? And now the second question is that मेरा gap है, बहुत सारा gap है, तो क्या करेंगे? I have done this engineering and completed in 2020 में किया है. Whether I will be, is it worth doing C-DAC or not? That is a question that you may be having it. इसका आंसर है, आपका गैप अगर आप बैठा तो गैप बढ़ते ही रहेगा, राइट? इट इज नो पॉइंट इन वेटिंग, सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द सब्सिक्वेंट, आगे आने वाला चीज के लिए वेट करके कुछ फायदा नहीं है. आपको अगर सीडैक में रैंक मिला है, सी कैट में रैंक मिला है, तो एडमिशन अब भी ले लीजिए, सो दैट योर गैप विल नॉट बी इंक्रीज्ड फर्दर. गैप तो रिड्यूस नहीं कर सकता. नाउ ये प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा कि नहीं है? Some companies, as I said, they consider students of 23, 24, 25 and all. 26 तो नहीं रहेगा इसमें. So तो ये तो है, some companies consider those students only. But as I said, there are many companies who consider the ones who are with a gap. That is not a criteria for them. We had top level companies which are offering packages in the past like 18 lakhs and all. They have considered, they have come open to all. तो ब्रांच भी प्रॉब्लम नहीं था, गैप भी प्रॉब्लम नहीं था. What they are interested is only what their performance during the course. You all know that Sundar Pichaya is a metallurgical engineer, right? So and he is heading the Google. So branches actually don't make a difference, gaps don't make a difference. It is only you who make the difference. Okay, अभी ये बताने के बाद मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ. 2026 का स्टूडेंट्स है, अभी हम 8 सेमेस्टर है, नहीं तो मैं MCA का फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स है. उन लोगों ने रिजल्ट अवेटिंग करके रजिस्ट्रेशन में डाला है. दे विल नॉट बी एबल टू टेक एडमिशन. ओके, 2026 का जो ग्रेजुएट होने वाला है, उन लोग एडमिशन नहीं ले सकता है. दिस बैच इज ओनली टिल 2025 तक का स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है?
Now, cross center placement opportunity, इसका मतलब क्या है? क्रॉस सेंटर मतलब एक्चुअली दिस क्रॉस रीजियन यू हैव, अगर जैसा है कि मैंने देखो मैं एडमिशन लिया बैंगलोर में, एंड बैंगलोर का आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड यू आर रिक्वेस्टिंग दैट माय प्लेसमेंट टू बी डन फ्रॉम Pune or Mumbai. Is that possible? I got admission in Bangalore or Hyderabad or Noida. Whether I'll be able to do the placement from Mumbai region or Pune region, this is not possible. Okay. If you are a student from that region, under that region, you have to go for the placements from that region only. Okay. Now, do companies prefer offline or online courses? To my experience, and it is no. There is no preference over that. For companies, what matters is the student. You are the person they will be considering. What is your knowledge? What is your performance during the course? This is what they see. So as a student, whether you are online or offline, do your best during the 6 months, and this, don't wait for the classes to start. You have 1 month exactly for the classes to start, right? You have 25th is what we are going to start the class. So exactly 1 month is there, 30 days are there. Use these 30 days also to prepare for yourself and becoming a better version of yourself. That's very very important thing. तो इसका टेंशन मत लो, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, प्लेसमेंट होने के लिए आपको परफॉर्मेंस करना ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग द कोर्स, एंड योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द process, campus process is the only thing you'll be seen. Now there are other frequently asked questions. Education gap, career gap, ये मैंने ऑलरेडी बताया है. करियर गैप, एजुकेशन गैप, करियर गैप भी सम कंपनीज वुडंट मेक, उसको प्रॉब्लम नहीं है. करियर गैप मतलब जो मैं बताता हूँ, some girls are there after marriage, they have taken a break for motherhood and everything. So वो मैटर करता है कि नहीं है. As I said, some companies may not consider, but some companies give very much preference for those married women who have taken a break. That is also there. There are students who have got very good package in special schemes of companies where they are taking the married women. तो उसका भी only thing is, as I said, you need to be very good during the 6 months. Eligibility not mentioned in the admission booklet. अभी जो कुछ एलिजिबिलिटी है वो मेंशन नहीं किया है. ऐसा है तो आप सेंटर से यू कनेक्ट विद acts@cdac.in, acts support@cdac.in में मेल लिखिए, मेरा एलिजिबिलिटी नॉट मेंशनड है इसमें, मैं क्या करूं. एंड दिस प्रॉब्लम विल नॉट हैपन मच because these are all taken care during the first during your registration time itself. But अगर फिर भी है तो any doubt you can connect with acts support.cdac. Locking of seat allocation, this is there or not? Yes, this is there. जैसा कि मुझे थर्ड प्रेफरेंस मिला है, मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस आगे दिया है, लेकिन थर्ड प्रेफरेंस से मुझे लॉक करना है, फ्रीज करना है. दैट इज पॉसिबल और नॉट? यस, यू कैन डू इट फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड्स, राइट. मॉडिफाइंग प्रेफरेंसेस आफ्टर राउंड 1, मैंने चॉइस फिल किया है एंड आई वांट टू चेंज दैट चॉइसेस, उसका ऑर्डर सीक्वेंस चेंज करना है क्या राउंड 2 में? दैट इज नॉट पॉसिबल. राउंड 1 एंड राउंड 2 आर बेस्ड ऑन दी choices that you have already given, तो उसका ऑप्शन नहीं है. Prerequisites of courses, what to prepare now is very important question. Some of this I have taken this FAQ from the previous Q&As which students have asked. अभी आपके पास 1 महीना है तो क्या करना है इसमें? तो this what you need to do is that all these things, the basic part of it, improve कर लीजिए. There are so many web resources are there, online resources are there. You can do certification courses through the online thing, like for example Coursera or Udemy or anything like that. You can take up YouTube में बहुत सारे courses है, जैसा कि base subjects के बारे में वो कर ले. जैसा for example for the advanced computing course, you can take up the courses on C programming and also on your aptitude improve करना बहुत जरूरी है. communication improve कर सकता है. logic building, problem solving, logic building and problem solving is very very important for all the students. So इसके पर वर्क कीजिए. This 1 month is going to be very crucial for you before joining. So start working now itself. Okay, whether you get admission wherever is there, start working. Software and hardware requirements for the courses. If you are a physical student, this all will be
given by the students, or they will let you know. You can, some centers allow you to use the laptops, some centers will ask you to bring your laptops which you can work on it. So this all specification centers will give you. ऑनलाइन कोर्स के लिए अपना लैपटॉप का जो स्पेसिफिकेशन है वो एडमिशन बुकलेट है, जैसे कि ये एडमिशन बुकलेट है, इसके पीछे पार्ट में लिखा है, यू कैन सी दैट इन द एडमिशन बुकलेट, वो सारे डिटेल्स लिखा है. CMC is easy, मैंने ऑलरेडी बताया है, I don't want to explain this anymore. Now, last question in the FAQ is, can I do this course along with my job? I am doing the job. Can I do an online course with my job? Because मैं उधर से ऐसा ही अटेंड कर लूंगा, अटेंडेंस के लिए ये चालू करके मैं जॉब कर लूंगा. That's not possible. Okay, the course is very demanding. आपको 1200 आवर्स है, जैसा कि नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में ये 1 साल चलता है. ये जो चीज़ है, हम लोग जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 मंथ्स का चलता है. वी आर रनिंग इन 1 week's time. So this is such an intensive course, वेरी जॉब ओरिएंटेड कोर्स, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स. ये आपको इसमें 100% मीन्स इवन 200% अटेंशन का जरूरी है. सो यू कैन नॉट डू द कोर्स along with your job, whether it is part-time job or whatever is there, you cannot do it because you need to have full attention. So that is all about my the presentation side. This is a time to take decision. Now take that decision about the course joining. I would advise all of you to join for the courses immediately by giving the choices wherever you are getting it. Don't wait for the next batch. So next batch you may have more candidates in that. So you have August batch, normally we have more candidates. So आपको ये जो रैंक में ये सेंटर्स मिलने का like it may be difficult. So take admission right now itself. And every day, as I said, is a good day to learn. So start preparing now itself. Don't wait for the any tomorrow. Start from today itself. Some important dates are there, as mentioned here. Yeah, so important dates here is online selection of courses and centers. You have this is going on now. It will end on 28th January. This is, you can take a screenshot of it and keep it with you so that it will be a quick reference for you. आपको जो जो अभी करने का. Second part 30th Jan को हो हम लोग करेंगे. You don't have to do it. The declaration of the ranks, and then you have the first installment fees. You have to do it. This is on 4th February तक आपको पे करना बहुत जरूरी है. For 11,800 you have to pay. Okay, and declaration of second round of seat allocation, this we will be doing it. This is based on the first choice you have given. First counseling का choices दिया, इसका है 6th February. Okay, so this happens. How does this happen? Round 2 में कैसे वैकेंसी आएगा? कुछ कैंडिडेट्स है राउंड 1 में जो एडमिशन दिया है उन लोगों ने पे नहीं किया, तो राउंड 2 में कुछ सेंटर्स में वैकेंसी आएगा, तो कुछ सेंटर्स में ऐसा है कि अपग्रेड हो सकता है. लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर सेकंड राउंड, दिस यू नीड टू डू इट. दिस इज ऑन 10th February 2026 5 o'clock. All payments are till 5 o'clock only. ठीक है, चॉइस फिलिंग you can do till midnight तक कर सकते हैं, but the payments have to be done by till 5 o'clock only. Remember that 5 बजे exactly it will be closed. Don't wait then say that one मैंने ये देख रहा था, wait, can you extend and all? Will not be doing that. No extension of dates on anything will not be there. Okay, next is important dates में payment of caution. This is part for the second counseling. I would suggest nobody should go for it. अगर first और second round में अगर मिला तो उसमें admission ले लीजिए. Don't wait for this, a very dangerous side. And तो उसमें अगर you have given choices in round 1 and round 2, we are getting admission in round 1 and round 2, take that in round 1 and round 2. Okay, this is still, if you are into this phase, this dates are 11 to 16 February 2026, and third round ka seat allocation will be declared. That's final round. On 17th February we will be announcing, will be declaring the third round. Last date of payment of the course fee, that is 23rd February को है. 23rd February you have to pay the balance fee. So अगर आपको पहले round 1 round 2 में admission मिला तो start working on your course fee, balance course fee. Registration of students 24th February 2026. ये registration में क्या होता है? Registration में you can do online courses के लिए registration can be done in online mode. You can do it. They will be giving the link and all for the online registration. And physical courses के लिए some centers may be giving online option.
to register. Some centers you will need to go on 24th to the center and do the registration over there. इसमें आपको आपका certificate दिखाना पड़ता है. If you have already completed the course, you have to EWS. show eligibility and everything. You have to show over there. You have to submit some photographs and things like that for creating your I-card. All these things are basic thing is that your eligibility आपको दिखाना पड़ेगा. If you have completed a course, if your records are ready. Result awaiting है तो फाइनल सेमेस्टर तक का मार्कशीट दिखाना बहुत जरूरी रहता है. नाउ स्टार्ट ऑफ पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आर ऑन 25th February 2026. 25th February को क्लास शुरू होगा. कुछ सेंटर्स में इसके पहले भी preparatory classes may be there. They will communicate with you, let you know about it. Okay. And the courses will end definitely on 11th August. That is the end of the course. इसके एक भी दिन extend नहीं होगा. तो 11th August में कोर्स खत्म होगा. उसका एक हफ्ते के बाद और 10 दिन के बाद प्लेसमेंट चालू होगा. So something like, your placement will be starting something on the date is given in the admission booklet. It is no, not given in the admission booklet, but it will start after 10 days. The placements will be starting. Okay. So 6 or 7 months from now, if you really prepare very well, you will be getting a job. So go with that dream and take up admissions wherever you are getting. Okay. So in addition to the PAN C-DAC sessions, there are certain centers, almost all centers, whether it is C-DAC center or the authorized training centers, they are doing center-specific Q&A sessions. They will be doing it. So this is what is given over there. You can take a screenshot of it and keep it with you. The details are given over there. The IDs and passwords or links, whatever is mentioned there, you can see that and take a screenshot and keep it. Suppose you want to take admission in Hyderabad, C-DAC Hyderabad, you want to know more about C-DAC Hyderabad. So 27th Tuesday, 10:30 to 12 o'clock, you can log in with this WebEx ID and ask questions. The course coordinator, the team will be sitting and interacting with you. So we have, this is the schedule for that. Make sure they will be talking more about the particular center. I have talked about all India. The particular center के बारे में ये center वालों ने आपको बताएंगे. ठीक है. The next one is about these center specific things. ये about our authorized training centers. So we have 9 authorized training centers. All these training centers are going to do these sessions on 26th. That is Monday, Republic Day के दिन, starting from 10 o'clock onwards. It is there. Everything is on Zoom. So Zoom ID and password is given over there. Take a screenshot and keep it with you and log in. Suppose you want to get information about SM Vita Mumbai, join the Zoom session on 26 from 12 to 1 o'clock. Okay. At 1 hour, they will close it. And then this is all about. So don't miss the catch and start preparing, fill the choices and start preparing. Don't even waste a single day. You are actually that dream work has started from today onwards. All the best and achieve your big dream.